Okay, welcome students to part 4 part 5 of lecture number 1। हमने बात की OSI मॉडल के OSI रेफरेंस मॉडल के 7 लेयर्स की। अभी इस पार्ट में थोड़ी बहुत हम लोग इसकी वर्किंग की या फंक्शंस की बात करेंगे। स्टार्ट में हमने बात की कि इसके जो 7 लेयर्स है उसको 2 ग्रुप्स में हमने डिवाइड किया हुआ है। एक तो ऊपर के 3 लेयर्स है और दूसरे नीचे 4 लेयर्स है। Here you can see the 3 upper layers, namely application, presentation and session. User interact with the computer at this application layer, and also that the upper layers are responsible for applications communicating between hosts. None of the upper layers know anything about networking or network address because that is the responsibility of the 4 bottom layers. The application layer provides a user interface, and the presentation layer not only represents data but also handles processing such as encryption, while the session layer keeps different applications data separate. Now you can see the 4 lower layers and their functions. You can see that it's these 4 bottom layers that define how data is transferred through physical media like wire, cable, fiber optics, switches and routers. These bottom layers also determine how to rebuild a data stream from a transmitting host to a destination host applications. Transport layer deals with the reliable or unreliable delivery of data by using either TCP or UDP. Also perform error correction. Network layer uses IP addresses for path selection and determination. Data link layer deals with frames and uses physical addressing scheme called MAC address. In addition to this, it also performs error detection. The physical layer handles bits and voltage levels on different communication medium. So these were the different functions performed by the OSI reference model layers. Okay, so I have separated the 7-layer model into 3 different functions. The upper layers, okay, the application, presentation and session, the middle layer, transport and network, and the bottom layers, data link and physical layer. The upper layers, application, presentation and session, communicate with the user interface and application. These are different functions to make a file, print, message, send a message, databases, application services, data encryption, compression, translation services, dialog control. These different functions are performed at the upper 3 layers, like dialog control are performed at the session layer. And it's just like you open a session, so you can transfer different data, send or receive data, and then you close the session. While at the middle layer, transport and networking, it deals with the reliable communication. If you're using the TCP, the transmission will be reliable, while if you are using the UDP, the transmission will be unreliable. End-to-end connection. In the same time, network deals with the routing table की हमने पिछले क्लास में बात की, path selection की बात की थी, तो these functions are handled over the network layer. While in the bottom but the bottom layers communicate to the local network. Framing is handled at the data link layer, and at the same time physical topology is handled at the physical layer. Okay, users, students, so this was our lecture number 1. थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देख लेते हैं कि हमने इसमें क्या पढ़ा। हम लोगों ने इंटरनेटवर्क की बात की, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा नेटवर्क से बात आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो उसको इंटरनेटवर्क कहते हैं। हमने इंटरनेटवर्किंग डिवाइसेस की बात की, राउटर की बात की, स्विच की बात की, ब्रिज की बात की, हब की बात की। इनका कोलिजन डोमेन और ब्रॉडकास्ट डोमेन के साथ जो रिलेशन है या उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है इनमें, इसकी हमने बात की। इसी तरीके से लेयर्ड अप्रोच की हमने बात की कि लेयर्ड अप्रोच के फ़ायदे क्या हो सकते हैं और रेफरेंस मॉडल लेयर्ड अप्रोच क्यों है, इसके क्या फ़ायदे हैं।
OSI मॉडल की हमने ब्रीफली बात की। तो ये तमाम चीज़ें हमने डिस्कस की। होपफुली आप लोगों को समझ आई होंगी। सजेशंस जो होंगे आप वो बिल्कुल उसको वेलकम करूँगा। आप क्वेश्चंस कर सकते हैं यूजिंग आवर व्हाट्सएप ग्रुप, और हमारा LMS भी आ रहा है। तो इंशाल्लाह वी विल बी इन टच। थैंक यू।